हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई विश कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। And also, friends, I am recording this video on 15th of August, so I wish you a very, very great 80th Independence Day in advance or belated, whenever you are watching this particular video. But friends, आज इस particular video में we are going to discuss a very important topic coming from the financial market. You already know that, friends, financial market say UPSC and many other exams, they have been asking quite frequently many questions, एंड दैट इज वाई फाइनेंशियल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से हमें कवर करना ज़रूरी है। दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में भी फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आया था, एंड दैट क्वेश्चन वाज इन फैक्ट फ्रॉम द सेम टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आया था, दैट्स वाई इट अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो न्यूज है वो है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। यू नो दैट फाइनेंशियल मार्केट हैज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। Money market basically deals with those financial assets whose maturity is less than 1 year, whereas capital market deals with those financial assets whose maturity is greater than equal to 1 year. Now, in capital market, there are two very important financial assets which are being bought and sold. One is the share market, the equity market, and on the other hand, you have bond market. Now, bond can be of different criteria. It can be a corporate bond, it can be a government bond, जिसको government securities कहते हैं. Then you have sovereign gold bond, and then you have additional tier 1 bond. और एक और काफी नया बॉन्ड है जो कि है आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, SGB, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। डोंट कंफ्यूज इट विद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो तो अब बेसिकली बंद हो चुका है, वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो भारत की तरफ से एक सबसे नया बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट गेट्स इज इशूड बाय आरबीआई, not directly government issue, government के लिए this thing is done by RBI. So RBI has basically issued this sovereign green bond on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है और ये क्यों न्यूज में है, एंड there's a very interesting term which makes this the term of the day, greenium, राइट। सो यहां से भी यूपीएससी प्रीलिम्स का अगला क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट यस यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड? तो सॉवरेन मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, इट्स नॉट अ प्राइवेट बॉन्ड, इट्स अ बॉन्ड विच इज इशूड बाय द सॉवरेन विच इज स्टेट, राइट। सो ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कौन इशू कर रहा है? स्टेट। एंड ओवर हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स नॉट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दिस बॉन्ड इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ what makes this bond special is, you know that whenever government of India needs money, it asks RBI that देखो मुझे पैसे चाहिए, and then RBI on behalf of government of India, it issues bond. And bond consists of basically three things: face value, coupon rate, and tenure or maturity. यही तो किसी बॉन्ड में होता है। So whenever government of India gets these kind of bond issued by RBI, एंड इसका पर्पस यही होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, दैट इट वांट्स टू रेज मनी, राइट। सो पैसे रेज करने के लिए इट गेट्स दीज बॉन्ड इशूड, एंड पीपल लाइक यू एंड मी or any other entity can buy these bonds, giving money to RBI, which then gives the money to government of India. And as an investor, I will be getting some benefit, which is the coupon rate. And at the time of maturity, I'm going to get the face value, which is the principal of the bond. Now, a normal government bond, a normal sovereign bond, a normal government bond, a normal government security, when it is issued by a RBI on behalf of government, the money raised via that process, उससे जो भी पैसा रेज किया जाता है वो गवर्नमेंट अपने मन से कहीं भी खर्च कर सकती है। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेट्स से गवर्नमेंट हैज इशूड दीज बॉन्ड्स and has got 1 lakh crore, has raised 1 lakh crore. So now it depends upon government of India whether they want to use that money in infrastructure, renewable energy, school development, hospital, or whatever it may be. But if government of India gets issued these kind of sovereign green bonds via RBI, then whatever money
the government of India is going to raise via these bonds, they have to primarily use for environmental sustainable projects. Environmental sustainable projects. And that is why the name of these bonds are sovereign green bond, right? So this bond is issued by government of India via RBI, and whatever money you raise through it, you have to compulsorily spend on a specific purpose, which is the environmentally sustainable projects, which can be renewable energy, clean transportation, sustainable water and waste management, climate change adaptation, energy efficiency, and sustainable management of natural resource. So all those conscious investor who wants to make investment, but that investment has to be a purpose based investment. And if your purpose is to do something for the nature, if your purpose is to contribute towards green infrastructure, then you are the right person to buy these kind of sovereign green bonds, because they are issued by the state, which means it is absolutely risk free. इसमें कोई risk नहीं है. So as an investor, you are able to fulfill the purpose, and you're able to fulfill this particular purpose without taking any sort of risk, right? तो ये जो concept है sovereign green bond का, ये पहली बार अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-2023 में, ये याद रखिएगा. And that is the year, financial year 2022-2023, when for the first time this bond was issued on 25th January and on 9th February. राइट आगे जाकर 2024 में फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये एक्सेस दे दिया गया था, दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन आल्सो बाय दीज काइंड ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. तो इसमें बेसिकली कौन इन्वेस्टर्स होते हैं? तो ऑब्वियसली मैंने कहा, जैसे जो ईएसजी फोकस फंड्स है, इन ईएसजी फोकस फंड्स मतलब दीज आर द फंड्स हु इन्वेस्ट मनी इन इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मतलब सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं. पेंशन फंड्स एंड इंस्टीट्यूशंस जिनके पास सस्टेनेबिलिटी मैंडेट है, मतलब द इंस्टीट्यूशन विच हैज टू डू समथिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी. सो दीज आर बेसिकली द फंड्स हु इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. And because यहाँ पे आप investment कर रहे हैं, and that investment is you are doing for a purpose, not primarily for profit, that is why as compared to a regular bond, you get a slightly lower yield or a slightly coupon rate or a slightly lower interest rate, right? So for example, let me give you an example कि अगर आप एक 30-year normal government bond को खरीदोगे, तो government might be giving you a 7% का coupon rate. But if you buy a sovereign green bond for the same maturity, which is 30-year, which is in this case, ये जो news है वो 30-year sovereign green bond के बारे में है. That's why I've taken this example of 30-year. Then you are going to get a coupon rate of 6.96%, which means, very important point, the coupon rate of sovereign green bonds are generally lower than a traditional government bond of the same maturity, right? आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 basis point का difference है. 100 basis point is equal to 1%. Now this is where the term of the day, the concept of the day comes, greenium. तो यही greenium होता है. So greenium is basically the lower yield, the lower coupon rate which an investor is ready to accept as compared to a regular bond, because the investor is a conscious investor and the investor is ready to take this lower interest rate, because the investor needs to finance, needs to support environmentally sustainable projects. So this is where the investor, in order to achieve a larger objective, is ready to compromise on certain interest. And this concept where an investor is ready to take a smaller coupon rate as compared to a regular bond of same maturity, this is what is referred to as ग्रीनियम. सो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स. देखिए ये प्रीलिम्स 2026 का क्वेश्चन है. अ बॉन्ड हुज प्रोसीड्स इज यूज्ड टू फाइनेंस और रीफाइनेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स, देन ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, बिकॉज यहां पे केवल इन्वायरमेंट के लिए नहीं लिखा है, यहां पे सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए लिखा है. अगर केवल इन्वायरमेंटल होता तब तो ये ग्रीन बॉन्ड हो जाता, अगर ये केवल सोशल प्रोजेक्ट होता तो सोशल बॉन्ड आता, बिकॉज यहां पे लिखा है कि बॉन्ड विच कैन बी यूज्ड आइदर फॉर इन्वायरमेंटल
projects or social projects, so which means sustainability projects. So that is why the best answer will be the sustainability bond. So now we can predict a question specifically about sovereign green bond, जो काफी समय से expected है, because 2022-2023 में launch हुआ था, but अभी तक यहाँ से question नहीं आया है. So now, because it has been in constant news, so you can expect this question. तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा. जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा. मैं इसके आंसर को एक दिन के बाद डालूंगा एंड वापस से आप आके चेक करिएगा. कोई भी डाउट है, कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी अपील है, सी आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स, राइट. सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर वीडियो सीरीज कब लॉन्च होगा. सी आई एम वेरी बिजी विद द क्लासेस, right? So it becomes sometimes impossible for me to go and record these kind of economy lectures, but I'm planning to do it somewhere. But anyways, even if that does not work, or even if I'm launching it at a later date, but via these things you can get the dynamic as well as static. So यहाँ से भी my friends, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में जो स्टैटिक ओरिएंटेड नहीं है, जो डायनेमिक ओरिएंटेड है, ट्रस्ट मी, इफ यू आर फॉलोइंग दीज वीडियोस, आपके सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगभग यहां से सॉल्व हो जाएंगे. बिकॉज यही चीज स्टैटिक में पढ़ोगे, लेकिन मैं डायनेमिक से ही स्टैटिक पढ़ा रहा हूं, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं. So that is going to be really helpful for you. So see you again some other videos, friends. Take care. Good night.